हेलो चेंज मेकर्स। डार्क फेलोशिप के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए 8 अक्टूबर, यानी आज पहला इंटरव्यू था। हम लोगों ने जैसा कि मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए थे, फिर कुछ पार्टिसिपेंट है जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है, उनके एक्सपीरियंसेस को हमने कंपाइल किया है कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और उन्हें मॉक इंटरव्यू से कैसे हेल्प मिला। तो एक एक करके 4 एक्सपीरियंसेस हम लोग आपको इस पूरे वीडियो में सुनाने वाले हैं। 4 अलग अलग लोगों के 4 अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो अगर आपका इंटरव्यू है, आपने मॉक इंटरव्यू का फॉर्म नहीं भरा है तो वो आप भर दें। बाकी इन एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुनिए अच्छे से, और आप इससे सीखिए, और अपने इंटरव्यूज के लिए कुछ वैल्यू एडिशन अगर होता है तो दैट विल बी वेरी मच हैप्पी फॉर अस। My interview went on for like 10 to 15 minutes. Interview was great. Interviewers were also nice. So presentation के बाद questions were asked related to the PPT and what kind of work you are doing on ground at present. So like for example, I'm doing policy implementation. So how the policy is being implemented and what were your suggestions related to it, how it can be improved. So questions were asked related to that basically. And mock interview से मेरे को ये help मिली that how I can improve upon my PPT. So it was very nice attending the mock interview. बाकी लोगों के लिए ये suggestion है, keep your PPT short because uh, they'll be asking you to keep your PPT and your presentation to like 10 to 10 minutes only, and बाकी वो time आपका out of 15 minutes they'll be asking you questions related to that only. So thank you, best of luck to all. So the interview was around for 13 to 14 minutes. Uh, uh, as I was the first one for the day to start with. So it start with normally greetings. There was a panel of around 4 professors from the DTU University. Uh, After the starting of the interview, first they normally greeted and asked to present the slide. Uh, it took me around 8 minutes to represent my slide, and after the representation of slide, the panel start asking question. So they asked me around 4 to 5 question. First was around like uh, wh- what's my motivation to join the dark, and how I can add value or fit for the dark. The second question they asked me to answer just in one liner. Then they asked me a question regarding the leadership qualities. So after the first question, most of the question were based on my slide only. So whatever the things I mentioned there, they asked me question around only. So they asked me a question regarding the leadership qualities because I had mentioned that role in my profile, and after that they had asked me 3 4 questions regarding my work with Delhi CMO, as I had mentioned uh, there. So they asked me like what was my exact role, what was my analysis, how I used to do, and as I had mentioned there regarding the analytical mm, things that uh, I had done there. So they had asked me regarding some technical questions if I had used any tool or not, or what kind of a statistical tool I used, and etc. So I think it was a uh, interview for around 13 to 14 minutes, where around 8 minutes I had represent the slide, and for next 4 to 5 minutes they had asked me 5 to 6 question. uh, Most of the question, like almost all the question, was based on my slide only, regarding the apart from this general question of my motivation and value addition of the point, value addition to the dark. Mm. Mock interview with step ahead was quite useful. First of all, I get a review about my PPT, so it was a useful for me.
and like almost whatever question I had practiced, the questions were on the same line. So because of a mock interview one night before, I had streamlined my thought process, which had helped me to quickly answer almost 4 questions out of 5. I would have a one suggestion for everyone. Anyways, almost all the questions that are being prepared through the mock interview by step ahead is on the line of a real interview only. But the thing that I would like to mention is, apart from the preparing for a presentation, just prepare around 15 to 20 question by yourself on your slide only. Just check like whatever things you had highlighted in your slide which is regarding this fellowship or the greatest achievement or the role and job role or the research project that you had ever done. So they will ask you question around the picky one only. So be prepared with that, like what you did, how you did, what was the outcome, your objective, motivation, like that. So I would just I would just like to suggest to everyone, uh, whatever you had highlighted on your PPT, just prepare the 5 W's around it. It will uh, really help and work for the interview. So my DARC interview was on 8th of October today, 4:30 p.m. It was of not more than 12 minutes interview. It started with chairperson asking me to present my PPT. He has given me 5 minutes to do that. Then he moved further for the questions, in which he asked me the data analysis methods which I know and which I've used in my previous work experiences, which I could also bring to DARC fellowship. And how will I use it? Next question was by a ma'am. So that panel was of 5 members. So the ma'am asked me about citizenship behavior in Delhi. How is it like? How can I scale it in 1 to 5 points? And how the students, my work is in school education, so how we can put this behavior in the schools for the budding children. So that was her second question. And then one last question was about the slide. The second slide of mine was in which I have put a issue which is a development issue and a challenging issue in Delhi school education, which is of dropout. So I have written from the data of the government that 17% of SC students has dropped out in 2020. So around that they have asked me question about my data sources, what kind of data sources I have been using for my researches, etc. So it ended well, but only 2 members have asked me questions. Other 3 haven't asked me questions. So Step Ahead initiative, I got to know from their YouTube video. Their YouTube video was very helpful to understand the process of DARC and what can be done, how it can be done. And Vinay sir and Saraswati ma'am were really great. They have helped me. They have taken my interview at 10 p.m. at night, the mock interview, so that I can be prepared for next day. I'm really thankful for that interview tips and the feedbacks they have given me. It really helped me in improving my slides, in improving my way of talking. It boosted confidence in me, of course. So very thankful to the team. And also one suggestion I would like to give to the other people whose interview is due, that you should be very confident. Of course you will be knowing that. Next, the most important thing is that they'll ask you question from anywhere, because some of my friends have faced no questions from their research experiences and all. They have directly asked questions out of the box. Okay, any terms they have asked, like for me also citizenship behavior was something out of context, but obviously for in the development sector it is important. So they'll ask you question out of nowhere, so you have to be prepared to answer them with your existing knowledge. And all the best. Thank you. सो मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 to 23 मिनट्स चला था.
इंटरव्यू में तो सबसे पहले पैनल आपको आपकी पीपीटी प्रेजेंट करने को बोलता है। जैसे ही आप फिर उसके बाद जैसे ही आपको मतलब उनको लगता है कि आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो पीपीटी प्रेजेंट करने में, 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है या 5 मिनट से ज़्यादा, जो भी उनका रहता है, जैसे उनको ये लगता है कि आप एक्सीड कर रहे हो टाइम लिमिट्स को, वो फ़ौरन ही आपसे कंक्लूड करने को बोलते हैं कि आप फटाफट अपना पीपीटी कंक्लूड करो। फिर उसके बाद एकेडमिक्स, बेसिकली वो जो क्वेश्चन करते हैं पीपीटी प्रेजेंट करने के बाद, वो एकेडमिक्स से रिलेटेड होते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, आपने जो जॉब की है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बेसिकली वो आपका थॉट प्रोसेस चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप कितना प्रेजेंटली, कितना एक्टिवली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कितना एक्टिवली आप सोच पा रहे हो, आपका जो आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है। सो वो आपको ऐसे ही कोई प्रॉब्लम दे देंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप इसका सलूशन आप कैसे करोगे। अगर आप इस पोजीशन पे हो, आपके हाथ में पावर है, अथॉरिटी होगी, तो आप इस प्रॉब्लम का सलूशन किस तरह से करोगे। तो वो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो बेसिकली यही चेक करेंगे कि आप कितना, आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है। तो फिर अगर आपने एक प्रोफेशन स्विच करके किसी दूसरे प्रोफेशन में अगर आप आए हो, तो इस तरह का भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं कि आपने क्यों स्विच किया है, मतलब रीज़न क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया है। फिर दूसरा, मेरा सब्जेक्ट पॉल साइंस रहा है, तो मुझसे मोस्टली उन्होंने पॉल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। सो गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर अगर आप, जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन किया तो आप जो आंसर कर रहे हो उस आंसर से वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने जैसे मुझसे पूछा था कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के क्या काम होते हैं, ये कैसे काम करता है। तो जो भी आप आंसर दोगे, आपसे वो फ़ौरन क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे कि अगर आप कोई आंसर दे रहे हो तो आपको मतलब वो चेक करेंगे कि आप कितना बेहतर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, आपकी नॉलेज कितनी है उसके बारे में, आप कितना श्योर हो अपने आंसर को लेकर, और आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। वो बार बार आपको एक ही पॉइंट पर लाकर स्टिक करने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए। अगर आप आंसर को बना रहे होगे, आप सोच रहे होगे, तो वो आपको थोड़ा सा आपको अपने आंसर पे स्टिक रहना होगा। सो फिर अगर आप ये गेस करके आंसर दे रहे हो, तो वो आपसे फ़ौरन वो समझ जाएंगे कि आपका थोड़ा सा आप अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास फैक्चुअल नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो ही आप उसका आंसर आगे बढ़ाओ। अदरवाइज़ वो आपसे फ़ौरन पूछ लेंगे कि इसका आप डाटा बताइए, इसका सोर्स बताइए, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो इसका ये आपको कैसे मिली है, कहाँ पे, कौन सा ऐसा डाटा है जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो बजाय कि आप कुछ ऐसा आंसर दो, आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पोलाइटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको वो फिर ऑब्वियसली आप आंसर करोगे। सो फिर उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको स्टेप अहेड का मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो आपका फ़ियर होगा ना कि आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको स्टेप अहेड सेम उसी लेवल का क्वेश्चन आपसे करता है, क्योंकि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या जॉब प्रोफाइल जो है आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो काफ़ी हद तक वो आपको प्रिपेयर कर देंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पीपीटी से या आपके इंटरव्यू में आपसे। सो दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो पीपीटी है वो आप स्टेप अहेड की टीम आपको बता देगी कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ को आपको आप हटा सकते हो, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आपके आंसर में, आप जब भी आप आंसर दोगे उनके क्वेश्चन का, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से आप इस आंसर को और बेहतर बना सकते हो और बेहतर आंसर दे सकते हो। सो मेरा यही सजेशन होगा सारे कैंडिडेट से जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो ज़रूर एक बार स्टेप अहेड का मॉक इंटरव्यू दें, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।